आयोजक मंडल और इंटरलॉक है, स्पॉन्सर एंड को स्पॉन्सर, रोटेट करने पड़ेगा। दिबियापुर क्रिकेट क्लब। यह नाम आज बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है। जिले में बंद कर दो इस नाम की चर्चा होती है। ऑटो रोटेशन बंद कर दो। लेकिन आज के हमारे ख्याल से 4-5 साल पहले की बात है। ऑन है ना, आप ठीक है। हमने दिबियापुर क्रिकेट क्लब को सीधा देखेगा क्या? जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए देखा। दिबियापुर क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार जी, उपाध्यक्ष देवेंद्र जी। अरे यार ये सब क्यों? चलन दे, ऐसी का दिक्कत, चल तो रही है ना। और उनके बीच के मतलब देख लो, चल रही है। देवेश राजपूत जी, पुनीत दीक्षित जी, राहुल यादव जी, इन सबको मैंने बहुत नजदीक से देखा है, जमीन पर काम करते हुए देखा है। हमें याद है पहला आयोजन रेलवे लाइन के किनारे हुआ था। न ग्राउंड था, पिच बनाने में हमारे ख्याल से खुद फावड़ा लेके कई लोग लगे हुए थे, तो हमने वो भी आयोजन देखा है। हमने वो भी देखा है जो औरैया रोड पर अलग अलग एक महाविद्यालय में हुआ था, फिर उसके बाद एक ग्राउंड में हुआ था, वो भी देखा। सभी में बस ठीक है, व्यवधान देखे हैं, सभी में टीम की कार्यकुशलता देखी है। पावर बैंक है, लेकिन इतनी ऊंची कैसे करे? एक एक व्यक्ति रखने पड़े जो इस दिबियापुर क्रिकेट क्लब से जुड़ा हुआ है, सभी ने जज्बा दिखाते हुए जो मेहनत की है उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। दिबियापुर क्रिकेट क्लब को संजोने वाले प्रत्येक व्यक्ति की दूरदर्शिता को मैं सलाम करता हूं। संतोष जी के दूरदर्शिता को सलाम करता हूं, जिन्होंने दिबियापुर नाम क्रिकेट क्लब का दिबियापुर क्रिकेट क्लब रखा। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जब हम देखते हैं कहीं बाहर किसी मंच पर, बड़े मंच पर दिबियापुर का नाम आता है, तो हमें लगता है कि हम जैसे जमीन से जुड़ रहे हैं। दिबियापुर से जुड़े हुए एक व्यक्ति जो दिबियापुर में नहीं रह रहे हैं, तनिष्क पांडे, नाम आपने शायद सुना होगा। सोनी टीवी पर एक शार्क टैंक इंडिया आता है, उसमें दिबियापुर के जो हमारे गुरुजी रहे हैं, स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र पांडे जी, उनके बेटे विपिन पांडे जी, उनके बेटे हैं तनिष्क पांडे। वो शार्क टैंक इंडिया में गए। उन्होंने और उनकी पत्नी, नाम नहीं याद आ रहा, दोनों लोगों ने 150, आस्था पांडे, 150 करोड़ की कंपनी बनाई है, और उस कंपनी के माध्यम से उस कंपनी को आगे बढ़ाते हुए वो शार्क टैंक इंडिया में शामिल हुए। तो हमें लगता है कि जब उन्होंने शार्क टैंक इंडिया में कहा मैं तनिष्क दिबियापुर उत्तर प्रदेश से, तो पहली नज़र में तो ये लगा दिबियापुर और कोई होगा, लेकिन जब गूगल किया गया, लोगों से आपस में बातचीत की गई, तो तनिष्क पांडे दिबियापुर के, दिबियापुर अपने दिबियापुर के। तो हमें लगता है कि जो दिबियापुर क्रिकेट क्लब नाम दिया गया, तो बहुत अच्छा नाम दिया गया। संतोष जी, देवेंद्र जी, पुनीत जी, जितने भी लोग इस टीम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा नाम दिया। भविष्य में मेरी शुभकामनाएं हैं कि दिबियापुर क्रिकेट क्लब से निकले हुए
सितारे निकले हुए खिलाड़ी टेस्ट में हमारा नाम रोशन करें। इसके लिए क्लब को भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्लब को भी आगे आना पड़ेगा, बहुत तेजी से मेहनत करनी पड़ेगी। स्टेडियम तैयार हो जाए तो खिलाड़ियों को, छोटे छोटे खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसी कड़ी में मैं देवेश जी को भी धन्यवाद दूंगा, जो एक समय दिबियापुर का नाम आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हम दिबियापुर वाले पेज की एक संरचना स्थापित की थी, जो भले ही आज थोड़ा ब्रेक है लेकिन दिबियापुर का नाम आगे बढ़ा। इसी कड़ी में मैंने भी थोड़ा सा एक प्रयास किया है, दिबियापुर द लीजेंड पेज चल रहा है और दिबियापुर का नाम इतना अच्छा है कि देश भर में लोग दिबियापुर से जुड़ना चाहते हैं। इसका हम एक उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं दिबियापुर द लीजेंड पेज, तो उसमें महीने में 1 करोड़ लोग दिबियापुर द लीजेंड पेज को विजिट करते हैं, देखते हैं। तो प्रतिदिन 3 लाख लोग देख रहे हैं, तो मतलब इसका ये है कि दिबियापुर को लोग पसंद करते हैं, भले ही देश के कोने कोने में बैठे हों। हाँ, एक चीज और बता दें कि तनिष्क पांडे जो शार्क टैंक इंडिया में शामिल हुए थे, उनकी मैंने पोस्ट अपने पेज पे डाली थी। उसके बाद उनके पिता, जो इस समय राजस्थान भिवाड़ी में एक कंपनी में महाप्रबंधक हैं, उन्होंने ही उस पेज पे आके कमेंट किया था। तो हमें लगा कि दिबियापुर को लोग कितने अच्छे से जानते हैं, कितने अच्छे से पसंद करते हैं। हम दिबियापुर क्रिकेट क्लब के संरक्षक, इसकी नींव संभालने वाले श्री गुरुनारायण अग्रवाल जी को प्रणाम करते हैं कि पग पग उन्होंने दिबियापुर क्रिकेट क्लब को संबल प्रदान किया। जहां भी धन की कमी आई उन्होंने सहयोग दिया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जितने आयोजक हैं, ऑक्शनर हैं, जो क्रिकेटरों की हौसला अफजाई के लिए आगे आए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक मंडल को इसलिए धन्यवाद कि उन्होंने हमें मंच साझा करने के लिए समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया, जिन्होंने अपनी अभी जो बातें बताई क्रिकेट क्लब की जमीनी स्तर से और अब तक का सफर। और एक चीज उनको बहुत अच्छी लगती है कि वैसे तो वो हर जगह से जुड़े, हर लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर किसी जगह दिबियापुर का नाम आता है तो मैंने देखा है कि उनके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल, एक अलग खुशी रहती है। और हो क्यों ना, जब दिबियापुर से जुड़े हुए युवा या दिबियापुर के आसपास क्षेत्र के जुड़े हुए युवा कुछ बढ़ रहे हो, कर रहे हो, तो स्वाभाविक तौर पे है कि खुशी होती है। जैसे भैया का पेज है दिबियापुर द लीजेंड करके, और बहुत अच्छा चल रहा है। भैया ने हमारे भी पेज की बात की थी, लेकिन आप लोगों को पता है कि कई चीजों से एक साथ जुड़ा होना पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि एक साथ कई चीजों कर पाऊं। आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि टाइटल स्पॉन्सर की भी भूमिका में हूं और मैनेजमेंट की भूमिका में हूं, और साथ में मुझे मंच संचालन की भी भूमिका दी गई है। ये मेरे लिए आप सब लोगों का प्यार है कि आप हर तरीके से जैसे चाहो यूज कर सकते हैं इस क्रिकेट क्लब के बढ़ने के लिए, और मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, रहूंगा। और इसी श्रेणी में हमारे एक स्पॉन्सर है MRP बेकरी से, तो मैं चाहूंगा कि मैनेजमेंट के लोग आए, उनको सर्टिफिकेट और साल के द्वारा सम्मानित करें। और मैं चाहूंगा कि इस कार के लिए पुनीत दीक्षित जी और टीटू यादव, वो MRP बेकरी जो स्पॉन्सर है, उनको स्टॉल देके और जो सर्टिफिकेट देके इनको सम्मानित करें, पुनीत जी और टीटू। और मैं चाहूंगा कि MRP बेकरी के जो ऑनर हैं वो आगे आए मंच पर और अपना सम्मान प्राप्त करें। अभी हम लोग अगले 2-3 मिनट में ऑक्शन की प्रक्रिया चालू कर देंगे, और जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए स्पॉन्सर्स हैं, अगले 2-3 मिनट में ये सम्मान की प्रक्रिया खत्म होगी।
उसके बाद हम लोग ऑप्शन शुरू कर देंगे। इसके बाद मैं चाहूंगा सत्यम टीवी जो कि ये लाइव दिखा रहे हैं और हमारे को स्पॉन्सर भी हैं, वो मंच पे आए और उनको भी सम्मानित किया जाए। इसके लिए अक्षय शुक्ला भैया और शिवनाथ भैया वो भी आ जाए। और इसके साथ ही हमारे आज के अतिथि में राजन शुक्ला भैया और गोपाल मिश्रा दद्दा, हाँ ये लोग आ गए, अब यही लोग देंगे। तो आदरणीय गोपाल दद्दा का और राजन भैया का स्वागत है। तो रामगढ़ ये सत्यम टीवी जो कि भागवत में अपने क्रिकेट में भी लाइव करेंगे, कई तरीके के आयोजन जो लाइव चलते हैं उसको लाइव भी करते हैं और इसके साथ अपने को स्पॉन्सर भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि राजन शुक्ला जी और गोपाल मिश्रा जी दोनों लोग जो सत्यम टीवी रामगढ़ है उनका स्वागत और सर्टिफिकेट उनको दें। इसके साथ जो भी को स्पॉन्सर हैं उनकी सीट इसके बाद मैं चाहूंगा कि जो हमारे अतिथि हैं उसके लिए अक्षय भैया और शिवनाथ भैया वो मंच पर आके राजन शुक्ला जी और गोपाल मिश्रा जी का स्वागत शॉल उड़ा के उनका स्वागत करें। और बाकी जो स्पॉन्सर हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था नीचे है, जो भी टीम ओनर है उनकी भी बैठने की व्यवस्था है, सबकी है। तो मंच पर जो अतिथि लोग हैं वो रहेंगे आज के। अक्षय भैया जी और शिवनाथ भैया जी दोनों के आज के अतिथियों का मंच पर स्वागत करें शॉल उड़ा के। फोटो फोटो और जो टीम के स्पॉन्सर्स हैं या जो मैनेजमेंट के हैं उनका भी बीच बीच में सम्मान होगा। और अभी फिलहाल में ही जुड़े सुजुकी एजेंसी के ओनर और प्रांजल मोटर हेलमेट हब के ओनर मैं गोपाल से चाहूंगा कि वो मंच पर आए और आज के संरक्षक जीएन अग्रवाल गुरु जी के माध्यम से सम्मान प्राप्त करें। गोपाल जी आदरणीय गुरु जी के माध्यम से आज का सम्मान प्राप्त करें, जो कि अभी ये कल नहीं जुड़े हैं, बहुत लेट से जुड़ पाए हैं, लेकिन सम्मान सबका बनता है। अगली बार इनका जल्दी लोगो देखने को मिलेगा। तो आदरणीय गुरु जी के माध्यम से प्रांजल मोटर और सुजुकी एजेंसी के मालिक गोपाल जी त्रिपाठी और इस समय क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं पीपरपुर से, और बाकी ढेर सारी आशीर्वाद शुभकामनाएं भविष्य के लिए। इसके बाद हमारे जो मैनेजमेंट के हिमांशु जी हैं सेव से, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पर आए और जो हमारे अतिथि हैं गोपाल भैया के माध्यम से ये शॉल का सम्मान प्राप्त करें। हिमांशु जी गोपाल भैया के द्वारा सम्मान प्राप्त करें। अरे तो दोनों गोपाल आ जाए, इससे अच्छी बात है। आज दोनों गोपाल आएंगे, दोनों प्रेम नहीं, अब दोनों गोपाल भैया आएंगे। तो दोनों गोपाल शंकर पोरवाल भैया गोपाल मिश्रा जी भैया द्वारा आज का सम्मान। और अब इसके बाद मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अगले 1 मिनट में जो आपकी धैर्य की घड़ियां हैं वो आप जो ऑप्शन है जो लोग देख रहे हैं
पहले तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे जहाँ से भी देख रहे हैं, अपने जो भी ग्रुप है या फेसबुक पेज है उस पर शेयर कर दें, ताकि आपको बीच में फिर बाद में परेशानी ना हो। जो भी आपके लोग देखने वाले या जो आपके प्लेयर्स हैं और जो प्लेयर्स भी लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि वो इस ऑक्शन के लाइव सेशन को शेयर जरूर करें। इसके अलावा मैं, चूंकि समय बहुत हो गया, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप लोगों का जो जुनून है, जो जज्बा है, जो आपकी टीम की जो आप मालिक हैं, उसके लिए जो आप खिलाड़ी आगे लेने वाले हैं, आपका जोश और जज्बे को और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद है कि अभी जो ऑक्शन करने के लिए हमारे बाहर से लोग आए हुए हैं, वो आपको स्नेहा जी, दीपांशु पाल जी और स्नेहा जी और दीपांशु पाल जी के माध्यम से अब लाइव जो ऑक्शन है हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से यहाँ पर सुनेंगे। बाकी आप लोगों को शायद मैनेजमेंट ने पूरा बता दिया, लैपटॉप पे आपका ऑक्शन चल रहा होगा, सामने डिस्प्ले है और जो भी आप बिट लगाएंगे वो तुरंत का तुरंत उसमें दिखता जाएगा। इसके अलावा जो भी समस्या है मैनेजमेंट से आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी बीच में मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर बोलूंगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं सबसे पहले स्नेहा जी जो नीट की तैयारी कर रही है कानपुर में, और आपको यहाँ पे ऑप्शन की जो चीजें हैं बताएंगी, थोड़ा इंडिकेट करेंगे और उसके बाद ऑप्शन शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आप लोग धैर्य रखिएगा, शांति रखिएगा और जो भी आपको जरूरत है उसके लिए आप मैनेजमेंट से बात करिएगा। स्नेहा जी आपका स्वागत है मंच पर, क्योंकि बहुत देर हो गई है और मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ। स्नेहा जी आप आइए और ऑप्शन के कुछ नियम अगर आपको जो बताएंगे, बाकी सबको पता है लेकिन औपचारिक तौर पर अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं और इसके बाद ऑप्शन शुरू करेंगे। बीच बीच में आप और दीपांशु पाल जी कोऑर्डिनेट करके जो ऑप्शन है उसको चालू करेंगे। सबसे पहले तालियों के साथ, क्योंकि कुछ नया और नए जज्बे के साथ आ रहे हैं, तो तालियों के साथ जरूर करिएगा आप। स्वागत, धन्यवाद। A very warm good afternoon everyone. Myself Neha, your auctioneer for today. First of all, I would love to congratulate every team member, player and owner sitting in front of me on this beautiful occasion of Dibiyapur Premier League Season 3. And again, welcome to this most thrilling event, DPL Season 3 2026 players. So we hope, and I hope, a very exciting day further. Again, we will begin an offering one by one for players, that going with the first player of this event 2026 DPL Season 3. So first of all, I would request Mr. Operator to show details on my tab so that we can continue a bit further.
क्यों ये लाइव किस पेज पे चल रहा है? दिबियापुर क्रिकेट क्लब पे, उस पे भैया के पे नहीं दिख रहा, देखो ले जाओ जल्दी ले जाओ। कुछ अभी हेलो, थोड़ा टेक्निकल इशू है 1-2 मिनट तक और उसके बाद लाइव शुरू हो जाएगा। बाकी तब तक आपके टेबल पर नाश्ता पानी है जो कि श्याम भरपूर उसका उपयोग कर रहे हैं। तो और मामू ये विरोधी टीम में भी रहते हैं मैच के दौरान, लेकिन वैसे ही हमेशा साथ रहते हैं। और बाकी सभी ऑनर बड़ी चेहरे पे उनकी प्रसन्नताएं हैं, कुछ बहुत सीरियस उनके चेहरे दिख रहे हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है क्योंकि ये सेशन जो लाइव सेशन है शाम को 5 बजे तक चलना है, मुझे पता है तब तक चेहरा डाउन हो जाए, तो अभी मुस्कुराहट रखिए। और अगले कुछ ही मिनटों में जो लाइव जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है और मुझे लग रहा है कि मंच पर जो व्यवस्थाएं थी वो हो गई हैं और अब शुरू करते हैं लाइव ऑक्शन। उन्हें बुला लो यार। I'm really sorry for the delay. Our first player 2026 auction is going to be player number 1, and this is Abhishek Dikshit. He is 23 years old and batsman. So anyone coming up, and the base prize is 1,000. I'm really sorry, player number 39, Abhishek Dikshit. He is 23 years old and batsman. Let's open at 1,000, base price, opening bid 1,000. Anyone coming at all? 1,000 is the base price. Abhishek Dikshit, he is batsman. Anyone coming up for Abhishek Dikshit? One, two, three. Currently the pairs are unsold because no one is coming up for Abhishek Dikshit. Unsold. So our next player is player number 45, Ajay KD. He is 27 years old and batsman. Base price is 1,000. Any one of the team coming up for Ajay KD? Anyone in the room coming up for Ajay KD? Base price is 1,000. Any of the team coming up for Ajay KD? Okay, Sallapur Titans him came up for Ajay KD, which is 2,000. Sallapur Titans. 1,000 for Sallapur Titans. Anyone, any team owner? Lakshya have also come for 2,000. Lakshya Strikers for 2,000. Anyone in the room for Ajay KD? Sallapur Titans again for 3,000. Sallapur Titans for 3,000. Lakshya Strikers. Anyone coming up for 4,000. Lakshya Strikers have again came up in the battle for 4,000. Anyone for Ajay KD? Lakshya Strikers are at 4,000 currently. T2 Blasters have came up, which will be 5,000. T2 Blasters. Anyone competing with T2 Blasters for Ajay KD? 5,000 current bid. 5,000. Anyone
Any pedal going up for Ajay KD? 7,000 is the current bid. Salapur Titans again for 8,000. Any pedal going up for him? Ajay KD current bid 8,000 for Salapur Titans. 9,000 for T2 Blasters again. 9,000 for T2 Blasters. Salapur Titans? No? The player Ajay KD is sold to T2 Blasters for 9,000. He is sold to T2 Blasters. Congratulations. Thank you for coming up. Okay, our next player. Next player is player number 77, Anuj Kumar. He is currently 30 years old, an all-rounder. And the base prize is 1,000. Any team pedal going up for Anuj Kumar. Hatkewala Gladiators have came for 1,000. Hatkewala Gladiators for 1,000. Gladiators have came the way. Anyone in this room? Anyone in this room? 1,000. Vision 11 for 2,000. Anyone in this room coming up for Anuj Kumar? Hatkewala Gladiators for 2,000. Gladiators are running actually. 2,000. Anyone coming up in this room? 3,000. 77. He is player number 77, Anuj Kumar. Vision 11. Vision 11 again. 4,000. For Vision 11, 4,000. Anyone coming up for Anuj Kumar? Anyone coming up for Gladiators? Again for 5,000. Gladiators for 5,000. Anyone in this room coming up for Anuj Kumar? Currently Gladiators are at maximum bid for 5,000. Anyone? Anyone? Vision 11? Vision 11 again for 6,000. Gladiators? Anyone? 7,000. Gladiators are 7,000. Current bid is 7,000. Anyone coming up in this room? T2 Blasters, 8,000. T2 Blasters, 8,000. Anyone coming up in this room for Anuj Kumar? Sorry. Current bid is 8,000, which is T2 Blasters. Gladiators for 9,000. Gladiators for 9,000. Gladiators at 9,000. Anyone, any team coming up for 9,000? Any team? T2 Blasters? Any team coming up for 9,000? Any team? Current bid is 9,000. Hatkewala Gladiators. 9,001. 9,002. 9,003. Player is sold to Hatkewala Gladiators for 9,000. Congratulations. Next player is Ashish Tiwari. He is player number 6, 32 years old, an all-rounder. Base prize is 1,000. Player is Ashish Tiwari. Currently is 32 years old, an all-rounder. Base prize is 1,000. Any pedal going up for Ashish Tiwari? Any pedal going up for Ashish Tiwari? Anyone in the room? Salapur Titans for 1,000. Thank you, Salapur Titans, for beginning. Anyone coming up in this room for Ashish Tiwari? Vision 11 for 2,000. Anyone? Anyone coming in this room for 2,000 for Ashish Tiwari? He's all-rounder. Salapur Titans for 3,000 again. Anyone competing Salapur 1,000 for 3,000? Anyone in this room? Vision 11. Current bid of Ashish Tiwari is 3,000, which is Salapur Titans. Salapur Titans current bid for Ashish
sold out to T2 Blasters. Our next player is player number 57, Mohammad Amir. He is currently 35 years old and bowler. And the base prize is 1,000. Anyone in this room coming up for Mohammad Amir? Cocoon Panthers have came up the way, 1,000. Anyone in this room for 1,000, Mohammad Amir? He is a bowler. Lakshya Strikers for 2,000. Lakshya Strikers for 2,000. Cocoon Panthers, 3,000. Cocoon Panthers, 3,000. Strikers, 4,000. Anyone? Strikers, 4,000. Anyone? Any paddle going up for? Any paddle going up for? So the maximum bid current of Mohammad Amir is 3,000 actually for Cocoon Panthers. 4,000. 4,000 the maximum bid. Lakshya Strikers. Actually it is not showing here. 4,000 is the maximum bid of Lakshya Strikers. Any paddle going up for Lakshya Strikers? 4,000 maximum bid. Lakshya Strikers. T2 Blasters 5,000. T2 Blasters 5,000 at maximum bid. T2 Blasters 5,000 maximum bid. Any paddle going up for T2 Blasters maximum bid? Lakshya Strikers, which will be 6,000. T2 Blasters, Lakshya Strikers, sorry, for 6,000. Any paddle going up for 6,000? Any paddle in this room going up for 6,000? Currently, Lakshya Strikers have paved all the way for 6,000. Anyone in this room paddling up for T2 Blasters 7,000? T2 Blasters 7,000. T2 Blasters 7,000. Anyone in this room? T2 Blasters 7,000. Anyone in this room? Lakshya Strikers? Anyone in this room coming up for 7,000? Maximum bid is T2 Blasters of 6,000. 7,000, sorry. The maximum bid is 7,000. 8,000 by LS, Lakshya Strikers, 8,000. Lakshya Strikers, 8,000. Anyone coming up in this room for 8,000? Lakshya Strikers, 8,000. Lakshya Strikers, 8,000. Anyone, any paddle going up for T2 Blasters, 9,000. T2 Blasters, 9,000. Any paddle going up for Mohammad Amir? Actually, the current bid is 9,000. Anyone? Lakshya Strikers? Any bid going up for? Okay, the player is sold to T2 Blasters for 9,000. Player is sold to T2 Blasters for 9,000. Sold. The player is sold. Our next player is player number 51, Mohammad Akil. He is 35 years old and all-rounder. And the base prize is 1,000. Any team paddling up for Mohammad Akil? Any team? Base prize is 1,000. Any team coming up for Mohammad Akil? Base prize is 1,000. Lakshya Strikers, 1,000. Thank you, Lakshya Strikers. Lakshya Strikers for 1,000. Anyone in this room competing against Lakshya Strikers? Anyone in this room competing for Mohammad Akil? He is currently 35 years old and all-rounder, and Lakshya Strikers at maximum bid of 1,000. Anyone in this room coming up against Lakshya Strikers? Anyone? Lakshya Strikers at maximum bid 1,000. Anyone in this room coming up for maximum bid of 1,000? Maximum bid of 1,000, Lakshya Strikers. The player is sold to Lakshya Strikers for 1,000. Maximum bid. Congratulations. The player is sold to Lakshya Strikers. Congratulations. Our next player is player number 46, Priyanshu Pal. He is currently 24 years old and batsman. And the base prize will be 1,000. Any team paddling up for Priyanshu Pal? Any team paddling up for Priyanshu Pal? Base prize is 1,000. Any team? Any team paddling up for Priyanshu Pal? He is currently 24 years old and batsman. Player number 46. Any team? Any team paddling up for Priyanshu Pal?
base prize is 1,000. He's a batsman, wicket keeper, right hand batsman, and off break. Base prize is 1,000. Gladiators have came the way 1,000. Gladiators have paved the way for 1,000. Gladiators have paved. Anyone in this room paddling against gladiators? Strikers 2,000. Strikers 2,000. Anyone in this room? Gladiators, the maximum bid is of 2,000. Anyone in this room? Anyone in this room competing against Luxor Strikers? 2,000 for maximum bid. Anyone in this room? Anyone competing against Luxor Strikers for 2,000? 2001, 2002, 2003. The player is sold to Luxor Strikers for 2,000. Priyanshu Pal has been sold to Luxor Strikers for 2,000. Congratulations. Our next player is player number 53, Abhishek Singh. He is 26 years old, batsman. And the base prize is 1,000. And the base prize is 1,000. Any team? Warriors have came the way, 1,000. Anyone in this room? Warrior 1,000. He is player number 53, Abhishek Singh. Warriors for 1,000. Here comes the opening bid. Vision 11 for 2,000. Anyone in this room? Vision 11, 2,000. For Warriors 3,000. Warriors for 3,000 for Abhishek Singh. Purvachanan Warriors. Panthers for 4,000. Panthers for 4,000. Anyone? Warriors? Current bid is 4,000. Anyone coming up? Vision 11. 5,000. Warriors have came the way 5,000. Maximum bid of 5,000 on Abhishek Singh. Anyone? Panthers 11. Titans for 6,000. Titans for 6,000. Anyone coming up for Abhishek Singh? Maximum bid is 6,000. 6,000. Warriors for 7,000. Warriors for 7,000. Anyone in this room coming up? Anyone? 7,000 Warriors. Abhishek Singh, current bid. 7,000 Warriors. Anyone? Anyone? 7,001. 7,002. Titans for 8,000. Titans for 8,000. Abhishek Singh, Titans for 8,000. 9,000 for Warriors. 9,000 for Warriors. Warriors are again in the race. Titans, 9,000. Player is sold to Purvachanan Warriors. Abhishek Singh is sold to Purvachanan Warriors for 9,000. 9,000. Congratulations. Sold out. Our next player is player number 52, Happy Gupta. He is currently 23 years old, all-rounder. Player number 63. Player number 63 is, actually it has changed. Player number 63, Sumit Kumar. He is currently 26 years old, all-rounder. And the base prize is 1,000. Gladiators have came the way for 1,000. Sumit Kumar, Gladiators for 1,000. Gladiators 1,000. Vision 11, 2,000. Gladiators 3,000. Gladiators 3,000. Vision 11, Gladiators for 4,000. Vision 11. 5,000 Gladiators. 11, 6,000. 7,000 Gladiators. 7,000, 11, 7,000 for Gladiators. Any pedal going up for? Any pedal going up for? Panther for 8,000. Panther for 8,000. Any pedal going up for? 9,000 Strikers. 9,000 Strikers. Any pedal going up for Sumit Kumar? Panthers 10,000. Panthers 10,000. Any pedal going up for Sumit Kumar? 10,000 is the current bid. 10,000 is the maximum bid. Any pedals going up for Sumit Kumar? Current bid is for Papun Panthers 10,000. Any pedals going up for 10,000? Strikers 11,000. Strikers again in the race 11,000. Any pedal? Panthers 12,000. 12,000 the current bid for Papun Panthers. 12,000. Any pedal going up for 12,000? Strikers 12,000 is the current maximum bid of Papun Panthers. Any pedal going up for him? 12,000 is the current maximum bid. 12,000. Sumit Kumar, he's a batsman, all-rounder. Actually, he's all-rounder. Any pedal going up for
Papoon Panthers, current bid 12,000. 12,000. T2 Blasters for 13,000. T2 Blasters for 13,000. Panthers, T2 Blasters for 13,000, current bid. Any paddle going up for Sumit Kumar, 13,000 is the maximum bid. Any paddles going up for Panthers for 14,000. Panthers for 14,000. Any paddle going up for 14,000. Any team in this room, paddle going up for 14,000 is the maximum bid for Papoon Panthers. Any team, maximum bid is 14,000. 14,001, 14,002, 14,003. The player is sold to Papoon Panthers for 14,000. Congratulations. The player is sold to Papoon Panthers. And our next player is player 1, Shivang Rathor. He is currently 18 years old and all-rounder, and the base prize is 1,000. Shivang Rathor, he is 18 years old, all-rounder. Base prize is 1,000. Any team paddling up for Shivang Rathor? Any team? Titans for 1,000. Thank you, Titans. Titans for 1,000. Any team paddling up for 1,000 against Titans? 1,000 Titans. Any team coming up? Any team coming up for 1,000? Any team coming up for 1,000? Titans 1,000. Any team coming up for 1,000 is a maximum bid against Titans. 1,000. Any team coming up in the race? Any team? 1,001, 1,002, 1,003. The player is sold to Sallapur Titans for 1,000. Congratulations, Shivang Rathor is sold to Sallapur Titans for 1,000. Okay, our next player coming up is player number 30. He is Kamal Yadav. He is 25 years old and all-rounder. Kamal Yadav, player number 30, 25 years old and all-rounder. The base prize is 1,000. Any team paddling up for 1,000? Kamal Yadav. Any team in this room paddling up for Kamal Yadav? Base prize is 1,000. We can start our bid. Any team coming up for Kamal Yadav? Any team coming up for Kamal Yadav? Sallapur Titans again in the race for 1,000 for Kamal Yadav. Sallapur Titan again in the race. Any team coming up? Any team coming up for Kamal Yadav? Sallapur Titans have actually paved the way for 1,000. Any team coming up for 1,000? Kamal Yadav, 25 years old, all-rounder. Any team? 1,001, 1,002, 1,003. The player is sold to Sallapur Titans for 1,000. For 1,000, Kamal Yadav is sold to Sallapur Titans. Congratulations. Okay, our next player is player number 42. Our next player is player number 42, which is Alok Kumar. Gladiators 1,000, Vision 11 2,000. For Alok Kumar, he is an all-rounder and 25 years old. Player number 42. For Vision 11 2,000. Gladiators 3,000. Vision 11, Gladiators for 3,000. Anyone in this room? For Alok Kumar. Warriors. Warriors. Again. For 3,000. Sorry, 4,000. Actually, it is not working. For 4,000. Warriors for 4,000. Anyone in this room against Warriors? 4,000. 4,000. Anyone coming up in this room for 4,000? Gladiators with Warriors for 4,000. Purvacharan Warriors are currently bidding on 4,000 of Alok Kumar. Strikers again in the race for 5,000. Strikers are again in the race for 5,000. Anyone? Warriors, Gladiators, Strikers are again in the race. Warriors are out. Anyone? Strikers at 5,000. Strikers are at 5,000. Warriors are already out. Strikers for 5,000. They are again in the race for 6,000. Warriors are again in the race for 6,000. Warriors are again in the race for 6,000. Any team, Gladiators, Strikers for 7,000. Strikers for 7,000. Anyone in this room striking against Strikers for 7,000? Alok Kumar.
with strikers for 7,000. Current bid of 7,000 Warriors Gladiators. Current bid is with strikers. Anyone coming up in this room for 7,000? Anyone coming up in this room for 7,000? Alok Kumar, 7,001, 7,002, 7,003. The player is sold to Lakshya Strikers for 7,000. Congratulations. Now coming up to our next player is player number 73, which is Rahul Dikshit. He is currently 30 years old and all-rounder, and the base prize is 1,000. Anyone in this room paddling up for Rahul Dikshit? Anyone in this room paddling? Vision 11, thank you Vision 11. 1,000, Vision 11 has started the bid. Vision 11, 1,000. Anyone in this room? Anyone in this room? Vision 11 at current bid of 1,000. Anyone in this room? Panthers are again back with 2,000. Panthers 2,000 for Rahul Dikshit. Panthers 2,000 for Rahul Dikshit. Anyone in this room coming up? Anyone in this room coming up again? 2,000. 11 again 3,000. 11 again for 3,000. Anyone coming up in this room for 3,000 against Vision 11? Anyone coming up against Vision 11? Panthers. Current bid is with Vision 11 of 3,000. Anyone in this room coming up? Anyone in this room coming up against Vision 11 of 3,000 of Rahul Dikshit? Anyone in this room coming up for 3,000? Panthers again for 4,000. Panthers again for 4,000. Anyone in this room coming up? Anyone in this room coming up for 4,000 against Panther? Rahul Dikshit, all-rounder. Vision 11, 5,000. Vision 11 again with 5,000. Anyone coming up, paddling up for 5,000 against Vision 11? Anyone in this room coming up? Vision 11 at current bid 5,000. Anyone paddling up against Vision 11? Rahul Dikshit, 5,000. Panther, Vision 11 at 5,000. 5,001, 5,002, 5,003. The player is sold to Vision 11 for 5,000. Congratulations. The player is sold to Vision 11. Coming up for our next player is player number 74, and which is Akash Pandey. Currently he is 36 years old and batsman, and the base prize is 1,000. Player is Akash Pandey. He is 36 years old and batsman. Base prize is 1,000. We can start our bid with 1,000. Any team paddling up for Akash? Any team paddling up for our player number 74, Akash? 1,000 is the base prize. Any team paddling up for Akash? Player number 74. Any team? Base prize is 1,000. Any team paddling up for Akash Kumar? He's a batsman and the base prize is 1,000. Any team in this room coming up for Akash? 1, 2, 3. The player is unsold. Next player is player number 24, Akshay Shukla. He is 30 years old and he's a batsman. And the base price is 1,000. We can continue our bidding with 1,000. Akshay Shukla, 30 years old. Player number 24, batsman. Base price is 1,000. Any team paddling up for Akshay Shukla? Any team paddling up for Akshay Shukla? Any team in this room paddling up for Akshay Shukla? Base price is 1,000. Any team? Lakshya Strikers? Any team paddling up for Akshay Shukla? Base price is 1,000. Gladiators? Any team? 1,000. Thank you very much for starting the bid. 1,000. Gladiators? Gladiators 1,000. Any team coming up in this room for Akshay Shukla? Any team? 1,000. Gladiators are with maximum bid 1,000. Any team in this room, under this roof, coming up for Akshay Shukla 1,000. Gladiators are actually with 1,000. 1,001. 1,000. Titans again for 2,000. Titans again with 2,000.
Anyone under this roof paddling against Titans? Gladiators, Titans with maximum bid of 2,000. Anyone in this room coming up for Akshay Shukla, 2,000 Titans? Anyone under this roof coming up for against Allapur Titans for 2,000? Anyone in this room coming up against Allapur Titans? Maximum bid is of 2,000. 2001? 2,000. Gladiators for 3,000. Gladiators are again back with the race, 3,000. Titans are out, so we will sold the player to Gladiators. Anyone in this room competing against Gladiators? So the player is sold to Gladiators for 3,000. The player is sold to Gladiators for 3,000. The player is sold to Gladiators for 3,000. Player number coming up for next player is player number 32, which is Lavish Yadav. Lavish Yadav, player number 32. He is currently 22 years old and he's a bowler. And the base prize is 1,000. Base prize is 1,000. Lavish Yadav, 22-year-old bowler. Base prize is 1,000. Anyone? Team coming up for Lavish. Our player number 32. Anyone? Yeah. Anyone coming up for Lavish Yadav? Any team coming up for Lavish Yadav? Any team coming up for Lavish Yadav? Any team under this roof coming up for Lavish Yadav? 1, 2, 3. The player is unsold. Player is unsold. Okay, coming up for our next player is player number 75, Lucky Yadav. Lucky Yadav, he is currently 23 years old, all-rounder. Vision 11 has started bid for 1,000. Vision 11 started the bid for 1,000. Anyone under this roof coming up for against Vision 11? Vision 11, 1,000, current bid or Lucky Yadav. Anyone in this room coming up, Vision 11 at current bid? Anyone in this room coming up against Vision 11 for Lucky Yadav? Gladiators for 2,000. Gladiators for 2,000. Gladiators for 2,000. Vision 11, currently Gladiators are at 2,000. Strikers at 3,000. Strikers at 3,000. Strikers at maximum bid for Lucky Yadav 3,000. Gladiators again for 4,000. Strikers, Gladiator against for 4,000. Any paddle going up against 4,000? Gladiators for 4,000. Vision 11, 5,000. Vision 11, 5,000. Strikers, Vision 11 at maximum bid of 5,000. Gladiators, Strikers, Vision 11 at maximum bid of 5,000. Gladiators for 6,000. Gladiators for 6,000. Any team under this roof coming up against Vision 11 for 7,000. Vision 11 for 7,000. Vision 11, 7,000. Any team under this roof coming up against Vision 11 for 7,000. Lucky Yadav, 7,000. Maximum bid, Vision 11. Anyone? Gladiators? Out? Strikers? Anyone? Coming up for 7,000 against Vision 11. 8,000? Thank you. 8,000 Luxus Strikers, 8,000 for Lucky Yadav. Vision 11, 8,000 current bid of Luxus Strikers. 8,000 current bid of Luxus Strikers. Anyone coming up against Luxus Strikers? Anyone in this room coming up against Luxus Strikers? 8,000 bid on Lucky Yadav. Anyone? 8,001, 8,002, 8,003. The player is sold to Luxus Strikers for 8,000. Okay, Vision 11 for 9,000. Vision 11 for 9,000. You have to raise the paddle up, actually more up, so that we can see. And before the counting starts, you have to understand the decision. After the counting, it will not be considered. Okay, 9,000 for Vision 11. Anyone paddling up against Vision 11? Gladiator? Anyone coming up for 9,000? Vision 11 at current bid. Anyone coming up against Vision 11?
paddling up for Vision 11. Anyone in this room paddling up against Vision 11? 9,000, Lucky Yadav, all-rounder. Okay, Vision 11, the player will be sold for 9,000. Lucky Yadav will be sold 9,000 to Vision 11. The player is sold to Vision 11 for 9,000. Okay, our next player is player number 82, Shivnath Sharma. He is 37 years old and all-rounder. The base prize is 1,000. Anyone paddling up for Shivnath Sharma? Anyone in this room paddling up for Shivnath Sharma? He's all-rounder. Base prize is 1,000. Anyone, any team under this roof coming up for bidding? Any team coming up for bidding? 1,000 is the base prize. Shivnath Sharma. Anyone coming up? Any team coming up for Shivnath Sharma? He's all-rounder. 1,000 is the base prize. Anyone, any team coming up for one, 2, 3. The player is unsold. The player is unsold. Shivnath Sharma is unsold. Okay, coming up to next player, player number 40, Amit Yadav. He is currently 32 years old and all-rounder. Player number 40, Amit Yadav, all-rounder. Base prize is 1,000. Anyone in this room coming up or paddling? Titans again for 1,000. Thank you, Titans, for starting the bid. Anyone paddling against Titans? 1,000 is the current bid. Anyone in this room paddling against Titans? Anyone in this room? Titans for 1,000 maximum bid. Anyone under this roof coming up for Amit Yadav? Anyone in this room coming up for Amit Yadav? Titans have started the bid. Lakshya Strikers for 2,000. Thank you, Lakshya Strikers. Lakshya Strikers for 2,000. Titans, Lakshya Strikers are at maximum bid of 2,000. Anyone under this roof coming up? 2,000 is the maximum bid of Amit Yadav. Anyone in this room coming up for Amit Yadav? 2,000 is the maximum bid with Lakshya Strikers. Anyone under this roof coming up against Lakshya Strikers? 2,000 maximum bid. Anyone? 2001, 2002, 2003. The player is sold to Lakshya Strikers for 2,000. Amit Yadav sold to Lakshya Strikers for 2,000. Congratulations. Next player is player number 78, Aryan Yadav. He is currently 21 years old and all-rounder, and the base prize is 1,000. Player number 78, Aryan Yadav, all-rounder. Any team paddling up with base prize of 1,000? Any team paddling up for base prize of 1,000? Aryan Yadav, all-rounder. Gladiators, thank you very much for 1,000. Gladiators, 1,000, they have started the bid. Gladiators, anyone under this roof against Panthers for 2,000? Panthers for 2,000. Gladiators, Panthers at a maximum bid of 2,000. Panthers of maximum bid of 2,000. Anyone in this room coming up against Papoon Panthers? Gladiators for 3,000. Gladiators for 3,000. You can raise the paddle more up. Yes, like this. 3,000. Hatkewada Gladiators for 3,000. Anyone coming up against Gladiators for 3,000? Aryan Yadav. Panthers for 4,000. Panthers for 4,000. Gladiators, Panther at a maximum bid, 4,000. Anyone in this room coming up against Panthers for 4,000? Aryan Yadav, player number 78. Anyone in this room competing against Papoon Panthers? Current bid 4,000. 4,001. Sallapur Titans for 5,000. T2 Blasters for 6,000. Current bid 6,000. T2 Blasters. Sallapur Titans for 7,000. Sallapur Titans for 7,000. Aryan Yadav. 7,000 maximum bid with Papoon Panthers again in the race for 8,000. Titans, Panthers are at 8,000. Anyone competing against any paddle? 8,000. Blasters again 9,000.
Blasters again 9,000. Blasters are again at 9,000. Panthers current bid is 9,000. Anyone coming up? Titans are back in the race for 10,000. 10,000 Titans in the race. 10,000 Sallapur Titans. 10,000. Blasters. Titans are at maximum bid. 11,000. Panthers are back in the race with 11,000. 11,000 Panthers are back in the race. 11,000 maximum bid. Aryan Yadav, Papoon Panthers, maximum bid 11,000. Anyone peddling up? 12,000 for Sallapur Titans. 12,000 Sallapur Titans. Panthers 12,000 maximum bid. Anyone? Out? They are out. 12,000. Anyone peddling up for 12,000? Any owner peddling up for 12,000? 12,001. Blasters 13,000. Titans are out. Blasters are 13,000. Anyone peddling up for 13,000? T2 Blasters, Vasundhara 13,000. Anyone in this room peddling up for Arenada 13,000? 13,000. 14,000 Sallapur Titans again in the race. 14,000 Sallapur Titans. Blasters 14,000. Sorry, Sallapur Titans. Sallapur Titans 14,000. Maximum bid 14,000 Sallapur Titans. Maximum bid 14,000. Anyone in this room coming up for 14,000? Aryan Yadav, Sallapur Titan, maximum bid. Blasters, Sallapur Titans 14,000. 15,000 T2 Blasters. 15,000 T2 Blasters. Titans 15,000 T2 Blasters. Out, they are out. Anyone coming up against T2 Blasters for Aryan Yadav 15,000? Anyone coming up in this room for 15,000? T2 Blasters maximum bid 15,000. Anyone? 15,001, 15,002, 15,003. The player sold to T2 Blasters for 15,000. Aryan Yadav sold to T2 Blasters for 15,000. Congratulations. Okay. Our next player is player number 2, Amit Shukla. He is 42 years old and batsman. The base prize is 1,000. Amit Shukla, 42 years old, batsman. Base prize is 1,000. Anyone peddling up for Amit Shukla? Anyone in this room? Base prize is 1,000. Anyone in this room peddling up for Amit Shukla? Amit Shukla. Base prize 1,000. Anyone in this room peddling up for Amit Shukla? 1,000 is the base prize. Anyone in this room? They are already out. Anyone in this room? Coming up? 1, 2, 3. The player is unsold. Player is unsold. Amit Shukla is unsold. Okay, coming up, next player is player number 14, Shamveer. He is 26 years old, all-rounder, and the base prize is 1,000. Shamveer, 26 years old, and the base prize is 1,000. Any team under this roof bidding for Shamveer 1,000? Anyone in this room bidding for Shamveer? Base prize is 1,000. Anyone? Any team strikers, gladiators, anyone? Bidding up for Shamveer, base price is 1,000. Vision 11, thank you for opening the prize. 1,000, Vision 11, 1,000, Vision 11. Anyone? 1,000, Vision 11. Vision 11, 1,000, anyone in this room competing for Shamveer? T2 Blasters, again 2,000 for Shamveer. Gladiators 3,000 for Shamveer. Bid is 3,000 in the hands of Gladiators. Vision 11, anyone? 4,000 T2 Blasters. 4,000 T2 Blasters. Gladiators maximum bid with 4,000 T2 Blasters. Shamveer maximum bid 4,000 T2 Blasters. Anyone in this room coming up for Shamveer? Vision 11, 5,000. Thank you, Vision 11. 5,000. Anyone coming up against Vision 11? 5,000. Panthers are back in the race for 6,000. 6,000 Shamveer. 6,000. Anyone? 6,000 maximum bid by Panthers. Blasters maximum bid
Maximum bid with T2 Blasters 7,000. Anyone coming up? They are out. The Panthers are already out. Anyone for 7,000 against T2 Blasters? Shyamveer, current bid with T2 Blasters. Maximum bid 7,000. Vision 11 8,000. Vision 11 8,000. Maximum bid Vision 11 8,000. Anyone coming up for 8,000 against Vision 11 for Shyamveer? Anyone? Blasters, current bid 8,000 with Vision 11. Anyone in this room coming up? Anyone coming up? 8,000 Vision 11, 8,001, 8,002, 8,003. The player is sold to Vision 11 for 8,000. Shyamveer is sold to Vision 11 for 8,000. Coming up, our next player is player number 18, Rahul Singh. Rahul Singh. He's 26 years old and all-rounder. Rahul Singh, player number 18, all-rounder, 26-year-old. Base price is 1,000. Thank you T2 Blasters for starting the bid. 1,000. Vision 11, 2,000. Vision 11, 2,000. Maximum bid for Rahul Singh. Vision 11. Maximum bid Vision 11, 2,000. Anyone coming up? Panthers are back in the race for 3,000. 4,000 for T2 Blasters. 5,000 for Pune Panthers. 6,000 Vision 11. 7,000 T2 Blasters. 8,000 Panthers. 8,000 Panthers. Anyone? 8,000 Panthers for Rahul Singh. Anyone? Anyone? 9,000 Sallapur Titans. Panthers. T2 Blasters 10,000. T2 Blasters at 11,000. Lakshya Strikers. 11,000 Lakshya Strikers. Anyone in this room competitive against Sallapur Titans 12,000. Sallapur Titans 12,000. Anyone? Strikers are back with 13,000. 13,000 Rahul Singh. Anyone in this room? Sallapur Titans 14,000 for Rahul Singh. Maximum bid 14,000. Strikers for 15,000. 16,000 Sallapur Titans. 16,000 Sallapur Titans. Maximum bid 16,000 Sallapur Titans. Anyone in this room coming up? Anyone in this room coming up for 16,000 against Sallapur Titans? Anyone in this room coming up? 16,000 maximum bid Sallapur Titans for Rahul Singh. 16,001, 16,002, 16,003. The player is sold to Sallapur Titans for 16,000. Rahul Singh is sold to Sallapur Titans for 16,000. Congratulations. Okay, coming up is our next player is player number 55, Puneet Singh. Puneet Dixit, 36 years old, all-rounder, base price is 1,000. Any team bidding up for Puneet Dixit, base price is 1,000. Hatkewala Gladiators, I can see, Hatkewala Gladiators for 1,000. 1,000 Gladiators. Anyone coming up for 1,000 Gladiators? 1,000 Gladiators. Maximum bid 1,000 Gladiators. Anyone competing against Gladiators? 1,000. They have started the bid. Anyone? Puneet Dixit, all-rounder. Anyone coming up? Anyone? 1,000 Hatkewala Gladiators. Anyone coming up? Anyone? 1, 2, 3. The player is sold to Gladiators for 1,000. Puneet Dixit is sold to Gladiators for 1,000. Congratulations. Now coming up to next player is player number 31, Prabhakar. Player number 31, Prabhakar. Player number 31 is Prabhakar. He is 42 years old, an all-rounder. Prabhakar, 42 years old, all-rounder, base price is 1,000. Anyone coming up? Pune Panthers have started the bid, 1,000 for Prabhakar. Anyone paddling up against Pune Panthers? Anyone paddling up against I can see Gladiators again, 2,000. Gladiators
Gladiators are again at 2,000. Panthers maximum bid with Gladiators 2,000. 2,000 maximum bid Gladiators. Anyone? 3,000 strikers. 3,000 strikers for Prabhakar. Prabhakar. Titans 4,000. Titans 4,000. 4,000 current bid with Titans. Anyone? Strikers maximum bid with Titans 4,000. Anyone? Titans with maximum bid 4,000. Anyone in this room coming up? 4,000 is the maximum bid. Titans 4,000 maximum bid. Strikers, Gladiators, anyone coming up? 4,000 is maximum bid. Prabhakar, all-rounder, maximum bid is 4,000. 4,000. Blasters 5,000. Blasters are with 5,000. Titans maximum bid with Blasters 5,000. 5,000 Blasters. Anyone in this room coming up against Blasters, Vasundhara? 5,000. Prabhakar with T2 Blasters, 5,000. Anyone in this room coming up against Vasundhara? 5,001. Titans for 6,000. Titans for 6,000. Titans. Blasters, Titans for 6,000 for Prabhakar. Titans for 6,000. Anyone in this room coming up against Titans? 6,000 maximum bid. Anyone coming up? Blasters, maximum bid of 6,000 against Titans. Anyone? Anyone in this room coming up for Prabhakar? Titans 6,000. 6,001. 6,002. 6,003. The player is sold to Sallapur Titans for 6,000. Congratulations. Okay. Coming up with our next player is player number 67. Sumir. Next player is Sumir. He is 25 years old. All-rounder. Next player 67. Sumir. 25 years old. All-rounder. Base price is 1,000. We can start our bidding. Anyone for Sumir? 1,000 is the base price. Any team paddling up for Sumir? Any team paddling up for Sumir? Base price is 1,000. Warriors are back in the race. 1,000. Warriors are back in the race for 1,000. Warriors are back in the race with maximum bid of 1,000 for Sumir. Anyone? Any team paddling up against 1,000? Sumir. 1,000. Purva Chanan Warriors. 1,000. Any team paddling up? 1,000 is the maximum bid till now. Any team coming up? Any team coming up under this roof against Warriors? 1,000 for Sumir. 1,001. 1,002. 1,003. The player is sold to Warriors for 1,000. Sumir is sold to Warriors for 1,000. Congratulations. Okay. Player number 13, Mahavir Singh, 37 years old, all-rounder, and the base price will be 1,000. Mahavir Singh, 37 years old, all-rounder, base price is 1,000. Anyone coming up for Mahavir Singh? Anyone coming up for Mahavir Singh? Base price is 1,000. Anyone in this room coming up? Base price is 1,000. We can start bidding. Anyone in this room? For Titans are for 1,000. Congratulations, Titans. 1,000. Titans for 1,000. Maximum bid till now is 1,000 for Mahavir Singh. Anyone in this room bidding? Anyone? 1,000 with Titans. Mahavir Singh all-rounder. 1,000 with Titans. Sallapur Titans for 1,000. Anyone? Anyone against Titans? 1,000. Anyone in this room competitive against Sallapur Titans? 1,000. Mahavir Singh. 1,000. 1,001. 1,002. 1,003. The player is sold to Sallapur Titans for 1,000. The player is sold to Sallapur Titans. Mahavir Singh sold to Sallapur Titans for 1,000. Okay, coming up, next player is player number 64, Suraj Tiwari. He's a 23 years old and batsman. Suraj Tiwari, currently 23 years old, batsman, and the base price is 1,000. Anyone paddling up for Suraj Tiwari?
Anyone interested in bidding? Anyone? T2 Blasters 1000, Gladiators for 2000. Suraj Tiwari, Vision 11 3000. Blasters again 4000, Gladiators 5000, Vision 11 6000, Warriors 7000. Warriors maximum bid 7000. Panthers 8000, Panthers 8000, Blasters 9000. Gladiators 10,000, Panther 11,000. Gladiators, Panthers are at maximum bid 11,000. 11,000 Panthers at maximum bid. Gladiators, Panthers are at maximum bid. Blasters, Panthers are at maximum bid. Anyone peddling up against Papun Panthers 11,000 for Suraj Tiwari. Warriors 12,000. Warriors 12,000. Panthers maximum bid Warriors. Panthers maximum bid 13,000 for Papun Panthers. 13,000 for Papun Panthers. Anyone peddling up? 13,000 maximum bid for Papun Panthers. Anyone peddling up? Let's say strikers 14,000. They're back in the race. 14,000 strikers. 14,000 maximum bid strikers. 14,000 maximum bid with strikers. Lakshya strikers 14,000 for Suraj Tiwari, all-rounder. Sorry, batsman. Anyone peddling up? Anyone? Panthers 15,000. Strikers Panthers for 15,000 Suraj Tiwari. Maximum bid. Anyone? Anyone in this room for 15,000? Papun Panthers. Warriors 16,000. Warriors 16,000. Warriors 16,000. Anyone peddling up against Warriors 16,000? Anyone in this room? Anyone? Warriors 16,000. Anyone in this room? Warriors 16,000 maximum bid. Anyone coming up? Panther 17,000. Panther 17,000 is maximum bid. Panther 17,000 maximum bid. Anyone in this room coming up against Panthers? Against Panthers 17,000. Anyone coming up for Suraj Tiwari? Warriors? Anyone coming up? 17,000 Papun Panthers. Anyone coming up? 17,000 Papun Panthers. Warriors 18,000. Warriors are back in the race with 18,000 maximum bid. Suraj Tiwari 18,000. Anyone coming up for Suraj Tiwari? Maximum bid is with Purhachanan. Warriors 18,000. Anyone coming up for 18,000? Anyone in this room coming up for 18,000? Maximum bid with Warriors 19,000 Papun Panthers. 19,000 Papun Panthers. 19,000 Papun Panthers. Maximum bid 19,000 Papun Panthers. Anyone under this roof coming up against 19,000 Papun Panthers? Warriors, Panthers at 19,000 maximum bid. Anyone in this room coming up, peddling up against Papun Panthers? 19,000. 19,000 Papun Panthers. 19,001. 19,002. 19,003. The player is sold to Papun Panthers for 19,000. Suraj Tiwari is sold to Papun Panthers for 19,000. Congratulations. और इसके बाद हमारे कुछ सम्मानित जो स्पॉन्सर हैं और पत्रकार महोदय बड़े भैया, तो उनका सम्मान होगा। और देवांशु जी, अभी स्नेहा जी थोड़ा आप रेस्ट करिएगा, मुझे लगता है एनर्जी बहुत जाती है, क्योंकि मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस मुझे आता है। इसके बाद देवांशु जी आगे की जो बिट है वो लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मंच पर इस समय हमारे पत्रकार भैया अमर उजाला से अमित चतुर्वेदी जी का सम्मान के लिए मैं राजन भैया से चाहूंगा कि वो साल उड़ा के उनको सम्मानित करें। राजन शुक्ला भैया अमित चतुर्वेदी भैया का सम्मान करें। सॉल मैं मैनेजमेंट से चाहूंगा कि सॉल लेके मंच पे पहुंचे। नहीं, अरे दूसरा अमित भैया आप आगे आ जाए। नहीं, राजन भैया का, राजन भैया का आप लोग ना, ये लंबे वाले भैया का, लंबे वाले भैया सिर्फ सॉल। हाँ
इसके बाद मैं बुलाऊंगा स्वास्थ्य होंडा से आकाश पांडे भैया है, वो मंच पर आए और स्पॉन्सर का जो सम्मान है और जो सर्टिफिकेट है उसको ले आके। आकाश भैया, इसके लिए मैं चाहूंगा कि हिमांशु चौबे जी आए मंच पर और वो आकाश भैया का सम्मान करें आके और सर्टिफिकेट दें आके। उनको करें। सॉल इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा अभिषेक दीक्षित उर्फ सनम भाई तो श्री अल्ट्रासाउंड जो इनका फपून चौराहे पे इनका प्रतिष्ठान है, इसके लिए अमित पाड़े भैया हमारे यहीं पर है मंच पर, वो उनका सर्टिफिकेट और सॉल द्वारा सम्मानित करेंगे। इस समय हमारे सनम भाई जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े और इस समय यूट्यूब चैनल भी इन्होंने शुरू किया है जो कि बहुत बढ़िया जा रहा है। और अमित भैया श्री राधा वल्लभ हरिवंश आपको राधे राधे, तो आपके द्वारा इनका सम्मान और सर्टिफिकेट। इसके बाद अमित भैया ये सर्टिफिकेट और आपको देना है। इसके बाद श्याम राजपूत जो नीतेश राजपूत रूरल ग्रीन एनर्जी से है वो आए और उनका सम्मान सीलू भैया जो है सीलू गौतम जी जो कि पीएनबी के प्रबंधक है इस समय अपने फफूंद ब्रांच के, तो उनके द्वारा श्याम राजपूत का सम्मान और सर्टिफिकेशन। ये सवाल आप भैया पीछे से रिसीव कर सकते हैं। और अब इसके बाद जो भी ऑनर है, मुझे लग रहा है कुछ चले गए हैं, वो अपने सीट पे आ जाए। इसके बाद मैं देवांशु पाल जी से आग्रह करूं, प्रियांशु पाल, हाँ सॉरी मिस्टेक, प्रियांशु पाल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और आगे की जो प्रक्रिया है तब तक स्नेहा जी थोड़ी देर रेस्ट करेंगी और अगले 20 से 25 प्लेयर तक देवांशु जी आपका साथ देंगे। तो सभी जो आपके जो टेबल है, जो भी टीम है वो ओके है भाई, शुरू की जाए। अच्छा, मैं मैनेजमेंट से चाहूंगा कि एक पर्दा लगवा दे इधर, नहीं तो मिस मैनेजमेंट देवेंद्र भैया और अच्छे भैया, थोड़ा धूप की व्यवस्था आप थोड़ा देख लिए, धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है, उसका क्या हो सकता है। आपसे आग्रह है कि कोई पर्दा, 2 पर्दे अगर लग जाए तो यहाँ से लेके हटके बड़ा तक हाँ तक भी धूप जा रही है। और बाकी आपके जो साथीगण हैं फफूंद पेंसर पे और पूर्वा छननवारी है, यहाँ पे आप लोग एक एक लोग बैठे हैं, अगर आप लोग बोले तो ओके है, आपकी तरफ से भी ओके है। तो प्रियांशु पाल आए और आगे की प्रक्रिया को बढ़ाए। और इसके बाद जो ब्रेक होगा लगभग 20 से 25 प्लेयर अभी और चलेंगे, उसके बाद आप लोगों के लिए भोजन की जलपान की व्यवस्था है यहीं पर, तो आप लोग अभी खाएंगे, उसके बाद फिर आगे भी प्रक्रिया होगी। मैं आपको इसलिए संकेत दे रहा हूँ क्योंकि एनर्जी धीमे धीमे डाउन हो रही होगी, तो जल्दी हम लोग भोजन के तरफ बढ़ेंगे और फिर बाकी जब हम लोग चलेंगे तो पूरा कंप्लीट करके ही निकलेंगे। प्रियांशु पाल
एक मिनट में अभी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। अमन थोड़ा मंच पे आके थोड़ा ये वो ऐप को चला दें। अच्छा भैया फोन कर दो ना, बोल दो पता नहीं 24 जी को बता दो ना क्या वो ये भाई बड़े वाले बड़े ये देखो तल्लू हटो मतलब वो क्या क्या करना है बाकी टीम ओनरों से है कि अगर उनके पास पानी की व्यवस्था है, वैसे जलपान की गई है, अगर पानी वगैरह कम पड़ता है तो वो मैनेजमेंट से संपर्क करके अपने टेबल पर पानी वगैरह मंगा सकते हैं। और दूसरा ये है कि प्रत्येक टेबल पे सिर्फ 4 ही लोग बैठे हैं, थोड़ा जैसे मैनेजमेंट ताकि अच्छा बना रहे, दूसरे लोग विरोध ना कर पाए, तो आप लोगों से अनुरोध है कि एक टेबल पे 4 लोग रहेंगे, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार, बाकी सामने कुर्सियां खाली हैं, आप वहां पे बैठ सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते टेबल पे 4 लोग रहेंगे। अच्छा, अब आप लोग अलर्ट और अब शुरू कर रहे हैं आगे की प्रक्रिया। Thank you. I would like to thank DPL family to give me opportunity to auction in my own district to first time. काफी स्टेट्स में ऑक्शन किया हुआ है, काफी डिस्ट्रिक्ट में भी किया, आज पहली बार अपने डिस्ट्रिक्ट में ऑक्शन कर रहा हूँ, काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। And we have the next player is please operator PC Warriors के जो भी ऑनर है प्लीज ऑक्शन टेबल पर आ जाए। PC Warriors के ऑक्शन टेबल पर उनके ऑनर आ रहा है। And we have the next player is Aman Rajput. Aman Rajput, all-rounder from Dibiyapur, 17 years old. Aman Rajput, base price 1,000. P2 Blasters, start the bid 1,000. Aman Rajput 1,000, P2 Blasters 2,000, PC Warriors 3,000, Vision 11. Vision 11, 4,000 P2 Blasters, 4,000 P2 Blasters, 5,000 Vision 11, 5,000, 6,000 P2 Blasters. Aman Rajput 6,000, P2 Blasters, current bid 6,000, 6,000 P2 Blasters, 7,000 Cocoon Panther, 7,000, 7,000 Cocoon Panther, 8,000 P2 Blasters, P2 Blasters, 8,000 Aman Rajput, all-rounder Aman Rajput, last bid P2 Blasters 8,000, 9,000 PC Warriors, 9,000 PC Warriors, Aman Rajput, 10,000 P2 Blasters, 10,000 P2 Blasters, anybody else? 11,000 Luch Strikers, 12,000 PC Warriors, 13,000 P2 Blasters, 13,000 P2 Blasters, 14,000 Luch Strikers, 14,000, 15,000 Cocoon Panthers, 15,000 Cocoon Panthers, anybody else? 15,000, 16,000 Luch Strikers, 16,000 Luch Strikers, 16,000 current bid, Aman Rajput 16,000, last bid Luch Strikers, anybody else? 17,000 PC Warriors, 17,000
18,000 PC Warriors. Aman Rajput 17,000, 18,000 Luch Strikers. Luch Strikers 18,000. Aman Rajput 18,000. Current bid Luch Strikers. Anybody else? 18,000, 19,000 PC Warriors. 19,000 PC Warriors. 20,000 Luch Strikers. 20,000 Aman Rajput. Anybody else? 20,000 Aman Rajput. 20,000 Luch Strikers. Current bid 20,000. Anybody else? Any team going up for Aman Rajput? 21,000 PC Warriors. 1,000 PC Warriors. Most expensive player Aman Rajput 21,000. 21,000 PC Warriors. Anybody else? 21,000. Last chance. Anybody else? Last chance for 21,000. 21,001, 21,002 and 21,003 sold. Aman Rajput sold to PC Warriors. And the next player is Adarsh Pal. Adarsh Pal, all-rounder Adarsh Pal. Base price 1,000. Any battle going up for Adarsh Pal? Vision 11, start the bid 1,000. Vision 11, start the bid 1,000. Adarsh Pal 1,000. Vision 11. Anybody else? Any team going up for Adarsh Pal? 1,000. Vision 11, start the bid. Last chance. Adarsh Pal 1,001, 1,002 and 1,003 sold. And we have the next player is Vishnu Hari Pandey. Vishnu Hari Pandey, all-rounder Vishnu Hari Pandey. Gladiators start the bid 1,000. Gladiators start the bid 1,000. 1,000 base price. Gladiators start the bid. Vishnu Hari Pandey. Anybody else going up for Vishnu Hari Pandey? Nobody can interested. Vishnu Hari Pandey and Gladiators start the bid 1,000. Last chance. All teams 1,001, 1,002 and 1,003 sold. And we have the next player is Kuldeep Kumar. Kuldeep Kumar, right hand batsman. Kuldeep Kumar. Any battle going up for T2 Blaster? Start the bid 1,000. Kuldeep Kumar 1,000 T2 Blasters. 1,000 T2 Blaster, 2,000 Papoon Panthers, 3,000 T2 Blasters, 3,000, 4,000 Papoon Panthers, 5,000 T2 Blasters, 6,000 Papoon Panthers, 7,000 T2 Blasters, 8,000 Hatke Bada Gladiators, 9,000 Papoon Panther, 10,000 T2 Blasters, 10,000, 11,000 Gladiators, 11,000 Gladiators, 12,000 T2 Blasters, T2 Blasters 12,000, Kuldeep Kumar 12,000 T2 Blasters, 13,000 Gladiators, 13,000 Gladiators, Kuldeep Kumar 13,000, current bid Gladiators 13,000, 14,000 T2 Blasters, 14,000, 15,000 Gladiators, 15,000 Gladiators, 15,000. Kuldeep Kumar, right hand batsman, 15,000 by Gladiators. Anybody else? Kuldeep Kumar, 15,001, 15,002 and 16,000 Luch Strikers. 16,000 Luch Strikers. Kuldeep Kumar, 16,000 Luch Strikers. 17,000 Gladiators. 17,000 Gladiators. 17,000 Gladiators. Anybody else? 17,000 Gladiators. 17,000. Last chance.
17,001, 17,002 and 17,003 sold. And the next player is Vishal Singh. Vishal Singh, right arm, medium bowler. Vishal Singh. Vishal Singh is the bowler. Base price 1,000. Any pedal going up for Vishal Singh. Vishal Singh. Bowler Vishal Singh. PC Warriors start the bid 1,000. PC Warriors